Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 9 Physical Optics Assignments. Now assignment 9.1. The third bright fringe in our double slit experiment makes a 2.4 degree angle with respect to the central line. The wavelength of the monochromatic light used is 418 nanometer. फाइंड द डिस्टेंस डी बिटवीन द सोर्सेज। हमने क्या फाइंड आउट करना है? जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू सोर्सेज वो हमने फाइंड आउट करना है। गिवन है जी हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट 480 नैनोमीटर एंड ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज m इज इक्विवेलेंट टू 3। एंगल हमारे पास है 2.4 डिग्री। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जिसको हमने d से रिप्रेजेंट किया है। इक्वेशन यहाँ पे लगेगी d sin of theta is equivalent to m lambda. Putting the values of sin theta, m and lambda, we will get d is equivalent to 3.4 exponent minus 5 meter. Now assignment 9.2. A beam of X-rays of wavelength 0.3 nanometer is incident on a crystal and gives a first order maximum when the glancing angle is 9 degrees. Find atomic spacing. हमारे पास गिवन है जी वेवलेंथ लैम्डा 0.3 नैनोमीटर एंड एंगल है जी हमारे पास 9 डिग्री। फाइंड हमने करना है जी एटॉमिक स्पेसिंग डी। इक्वेशन यहाँ पे लगेगी 2d sin थीटा इज इक्विवेलेंट टू n लैम्डा, या आप इसको m लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो 2d sin थीटा इज इक्विवेलेंट टू n लैम्डा में हमारे पास जब हम इसको d के लिए अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 sin ऑफ थीटा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, lambda and theta, we will get d is equivalent to 9.6 exponent minus 10 meter, or in nanometer it will be 0.96 nanometer. Now that's all about the assignments of chapter number 9. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.